Yeah. Okay, good afternoon. Hi, everyone. We are meeting after a long time, so it's not big a deal. Maybe you might have taken rest, but don't take it as a discontinuation of it. So now let's proceed further. Now we were talking about some of the important architectures of the computer vision recognition. We go through the VGG block, how the architecture was created, and earlier one more. Maybe the name is ResNet. Now this time we are going to discuss the Inception and Google LeanIt. See, important innovations in the use of convolution layers were proposed in the 2015 paper by Christian Szegedi et al., titled Going Deeper with Convolutions. Going Deeper with Convolutions. In the paper, the authors propose an architecture referred to as Inception. Okay? Our Inception version 1 to differentiate it from extensions. And a specific model called Google LeanIt. So, two things, an architecture named Inception version 1 and a specific model called Google LeanIt that achieved top result in the 2014 version of the ILS VRC challenge. The key innovation on the Inception model is called the Inception module. This is a block of parallel convolution layers, right? Guys, this is a block of parallel convolution layers with different sized filters. For example, in block of parallel convolution with different size filter, like some filters are 1 by 1, some filters are 3 by 3, some filters are 5 by 5 kernel size, and a 3 by 3 max pooling layer, the result of which are then concatenated. Below is an example of Inception model taken from the paper. We will take a better look of it, but let's continue with the text. A problem with the naive implementation of the Inception model is that the number of filters, depth or channels that means simple implementation of the Inception model is that the number of filters, that is 1 by 1, 3 by 3, 5 by filters, depth or channel begin to build up fast, especially when Inception module are stacked. So the number of filters begin to build up fast, especially when Inception modules are stacked one over another, performing convolutions with larger filter size. Performing the convolutions with larger filter size, for example, 3 and 5, can be computationally expensive on a large number of filters. To address this, 1 by 1 convolution layer are used to reduce the number of filters in the Inception model. Specifically, before the 3 by 3 and 5 by 5 convolution layers, and after the pooling layers. The image below, taken from the paper, shows this change to the Inception model. The image below, taken from the paper, shows this change to the Inception model. A second important design decision in the Inception model was connecting the output at different point in the model. Correcting the output of this at different point in the model. This was achieved by creating a small offshoot output network from the main network that were trained to make a prediction. The intent was to provide an additional error signal from the classification task at different points of the deep model in order to address the vanishing gradient problem. These small output network were then removed after training.
Below shows a rotated version, left to right for input to output. Left to right for input to output of the architecture of the Google LeanNet model taken from the paper using the Inception modules from the input on the left to the output classification on the right, and the two additional output networks that were only used during training. See this, we will increase this. We will see this in more detail here. V1. I think this was the image. We are into the protein image classification. This is the whole chart. देखते हैं यहाँ पे. तो ये देखिए, ये ब्लू वाले जो हैं कन्वोल्यूशन लेयर विद, बहुत ही ब्लर्ड इमेज है, 7x7 है, पैच साइज 7x7, दैट इज कर्नल साइज 7x7 है. देखिए इसमें 7x7 का है. मैक्स पूल, उसके बाद रेड कलर का मैक्स पूल है जिसमें 3x3 का मैक्स पूल है. फिर ये ग्रीन वाला जो है कन्वोल्यूशन लेयर है दोस्तों, ये 3x3 की है. कन्वोल्यूशन 1, मैक्स पूल 3x3 का 2, डेप्थ रिड्यूस प्रोजेक्ट. थोड़ा इसको समझना पड़ेगा ये कैसे है, आइए देखते हैं. ओवरलैपिंग मैक्स पुलिंग. Overlapping max pooling was used and a large average pooling operation was used at the end of the feature extraction part of the model prior to the classifier part of the model. We can summarize the key aspect of the architecture relevant in the modern model as follows. Overlapping max pooling was used and a large average pooling operation was used at the end of the feature extraction part of the model prior to the classifier part of the model. We can summarize the key aspect of the architecture relevant in modern model as follows. Development and repetition of the Inception module, heavy use of the one-by-one convolution to reduce the number of channels, use of errors feedback at multiple points in the network, development of very deep 22-layer model, use of global averaging pooling for the output of the model. We will explore how to implement Inception model in Keras later. जब हम लोग Keras में लिखेंगे Inception module को, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से इसके सारे पार्ट को समझ पाएंगे. A final important innovation in convolution neural net that we will review was proposed by Camille et al. In their 2016 paper titled Deep Residual Learning for Image Recognition. In the paper, the authors proposed a very deep model called residual network
or ResNet, deep residual learning for image recognition. For SOT, an example of which achieved success on the 2015 version of the ILS VRC challenge. Their model had an impressive 152 layers. Key to the model design is the idea of the residual blocks that make use of shortcut connections. These are simply connections in the network architecture where the input is kept as is, not weighted, and passed on to a deeper layer, for example, skipping the next layer. A residual block is a pattern of two convolution layers with ReLU रेसिडुअल ब्लॉक क्या है? ये पैटर्न है दो कन्वोल्यूशन लेयर्स का with ReLU activation where the output of the block is combined with the input to the block. जहां पे output of the block combine किया गया है input to the block. For example, the shortcut connection. A projected version of the input used via 1x1 in the shape of the input to the block is different to the output of the block, so-called 1x1 convolution. These are referred to as projected shortcut connections compared to the unweighted or identity shortcut connections. The authors start with what they call a plane network. Which is a VGG-inspired deep convolution neural network with small filters, 3x3, grouped convolution layers followed with no pooling in between, and an average pooling at the end of the feature detector part of the model prior to the fully connected output layer with a softmax activation function. The plane network is modified to become a residual network by adding shortcut connections in order to define residual blocks. Typically, the shape of the input for the shortcut connection is the same size as the output of the residual block. The image below was taken from the paper and from left to right compares the architecture of a VGG model, a plane convolution model, and a version of the plane convolutional with a residual model called residual network. ये हमारा मॉडल है VGG 19, ये 34 लेयर प्लेन, एंड ये हमारा मॉडल है 34 लेयर रेसिडुअल. तो रेसिडुअल मॉडल में क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे जो ये इनपुट है, ये दो की ब्लॉक कन्वोल्यूशन लेयर जो है, यहां से जो ये आउटपुट है और इसके आउटपुट में कंबाइन करके फिर इसमें इंसर्ट किया जा रहा है. फिर यहाँ पे देखिए ये जो दो लेयर का ये जो आउटपुट है, यहाँ के लेयर के आउटपुट को कंबाइन करके इसमें इंसर्ट किया जा रहा है. फिर इस यहाँ पे दो लेयर का जो रिजल्ट आया आउटपुट, यहाँ के लेयर को यहाँ लाके मिलाया जा रहा है आउटपुट को, और एक तरीके से कुछ एलएसटीएम का जिसको कह रहे हैं रेसिडुअल बोल रहे हैं दोस्तों. ठीक है, शॉर्टकट कनेक्शंस इसको बोला गया है दो के ब्लॉक के बाद. देखिए फिर से पढ़ते हैं. ए फाइनल इंपॉर्टेंट इनोवेशन इन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क दैट विल रिव्यू वाज प्रपोज्ड बाय कैमिंग ही एट अल इन देयर 2016 पेपर टाइटल्ड डीप रेसिडुअल लर्निंग फॉर इमेज रिकॉग्निशन. In the paper, the authors proposed a very deep model called a residual network or ResNet for short, an example of which achieved success on the 2015 version of the ILS VRC challenge. Their model had an impressive 152 layers. Key to the model design is the idea of residual blocks that make use of shortcut connections. Residual blocks जो shortcut connections का यूज कर रहे हैं. These are simply connections in the network architecture where the input is kept as is, not weighted. जो input है उसको as it is रख रहे हैं, उसको weighted नहीं कर रहे हैं, and passed to a deeper layer, for example skipping the next layer.
तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ब्लॉक है, यहां से क्या है, इसका जो वेटेड इस पे नहीं इंसर्ट हो रहा है, जो आउटपुट है सीधे इसके लिए इनपुट है, और जो इसका आउटपुट है यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे आके मर्ज कर रहे हैं, शॉर्टकट कनेक्शन। ठीक है, इसी को हम लोगों ने रेसिडुअल ब्लॉक बोला है। Their residual ResNet is sort of example for which achieve success. Their model has an impressive 152 layers. Key to the model design is the idea of the residual blocks. The residual blocks है इसका idea. Key to the model design is the idea of residual blocks that make use of shortcut connections. The key to the model design is the key to the model design is the idea of residual blocks. Key to the model design is the idea of residual blocks that make use of shortcut connections. These are simply connections in the network architecture where the input is kept as it is, not weighted, and passed to a deeper layer, skipping the next layer. A residual block is a pattern of two convolutional layers. A residual block is a pattern of two convolutional layers with ReLU activation. Residual block is a pattern of two convolutional layers with ReLU activation, where the output of this block is combined with the input to the block. Where the output of the block is combined with the input to the block. जहां की जो आउटपुट है ब्लॉक का, उसको हम कंबाइन कर दे रहे हैं विद द इनपुट टू द ब्लॉक. ReLU activation. A residual block is a pattern of two convolution layer with ReLU activation where the output of the block is combined with the input to output of the block. Output of the, देखिए दो convolution layer हम ले रहे हैं, इसका output को हम combine कर दे रहे हैं पीने वाले layer की से. A residual block is a pattern of two convolutional layers with ReLU activation where the output of the block is combined with the input to the block. Simple सी चीज है. आउटपुट है जो उस ब्लॉक का, उसको कंबाइन कर दे रहे हैं हम लोग इनपुट ऑफ द ब्लॉक से. फॉर एग्जांपल द शॉर्टकट कनेक्शन. A projected version of the input used via 1 by 1 if the shape of the input to the block is different. 1 by 1 if the shape, अगर shape जो है, if the shape of the input to the block is different to the output of the block, so-called 1 by 1 convolutions, they are referred to as projected shortcut connections. देखिए अब 1 by 1 का पैच लेने से क्या फायदा होता है. देखिए प्रियवदा एंड किरण, देखिए अगर आपके पास आपके कंप्यूटर विजन के इमेज जो है 3 चैनल है, रेड ग्रीन ब्लू, या आपने किसी लेयर पे नंबर ऑफ फिल्टर्स बहुत बता दिए, तो आपके नंबर ऑफ चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए. ठीक है, अब नंबर ऑफ चैनल बहुत ज्यादा हो गए दोस्तों, तो वहां पे आप क्या करो, कर्नल साइज 1 by 1 का ले लोगे. जब 1 by 1 का कर्नल साइज लेंगे आप, तो क्या होगा, एक का जितने भी चैनल्स है सबके साथ वो मर्ज होके वैल्यू एक जगह मैच होगी, और आप एक फिल्टर बनाओगे तो वो आपका एक ही बनेगा दोस्तों. तो सेम साइज का आपका इमेज आउटपुट में आ गया. द प्लेन नेटवर्क इज मॉडिफाइड टू बिकम ए रेसिडुअल नेटवर्क. These are referred to as projected shortcut connections compared to the unweighted or identity shortcut connections. The authors start with what they call a plane network, which is a VGG inspired deep convolutional neural network with small filters 3 by 3, grouped convolutional layers followed with no pooling in between, and an average pooling at the end of the feature detector part of the model prior to the fully connected output layer with a softmax activation function.
The plane network is modified to become a residual network by adding shortcut connections in order to define residual blocks. Typically, the shape of the input for the shortcut connection, typically the shape है, typically the shape of the input, typically the shape of the input to the shortcut connection is the same as the output of the residual block. The image below was taken from the paper. The plane network is modified to become a residual network by adding shortcut connections. In order to define residual blocks. Typically, the shape of the input for the shortcut connections is the same as the output of the residual block. Typically, हम देखें the shape of the input, typically the shape of the input for the shortcut connections. Typically, the shape of the input for the shortcut connections is the same as the output of the residual block. The image below was taken from the paper and from left to right compares the architecture of VGG model, a plane convolution model and a version of the plane convolution with the residual model called a residual network. अब देखिए ये VGG मॉडल है, दो कन्वोल्यूशन लेयर है, फिर पूलिंग है, दो कन्वोल्यूशन लेयर, फिर पूलिंग है, चार कन्वोल्यूशन की लेयर है 3x3 की, ये 1x1 की है, ये 3x3 की है, ये 3x3 की है, लेकिन इस 256 चैनल्स हैं फिल्टर साइज, और ये फिर जो पूलिंग हुई, फिर ये हुई पूलिंग, और ये हमारा ये है, ये एक हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड 34 लेयर का प्लेन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और रेसिडुअल नेटवर्क. ये दो के ब्लॉक हैं, और यहाँ पे अनवेटेड, ये इसका आउटपुट यहाँ पे मर्ज हो जा रहा है, जो यहाँ से वेटेड होके आ रहा है, और इसी को हम लोग रेसिडुअल ब्लॉक बोल रहे हैं. We can summarize the key aspect of the architecture relevant in modern models as follows: use of shortcut connections, development and repetition of the residual block, development of a very deep 150 layer model. अब देखते हैं, we will explore how to implement residual block in Keras later. ये भी हम कोड करेंगे. अब देखिए, how to use 1x1 convolutions to manage model complexity. Pooling can be used to downsample the content of feature map. ठीक है, downsample कर दिया. Reducing their width and height while maintaining their salient feature. यानी उसके important features को हम intact रख रहे हैं, और हम लोगों ने उसके reduce कर दिया, downsample कर दिया. Reducing their width and height whilst maintaining their salient feature. A problem with deep convolution neural network is that the number of feature maps often increases with the depth of the network. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, नंबर ऑफ फीचर मैप्स ऑफन इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द नेटवर्क. जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाते हैं नेटवर्क की, यानी नंबर ऑफ फीचर मैप्स बढ़ाते हैं. दिस प्रॉब्लम कैन रिजल्ट in a dramatic increase in the number of parameters and computation required. When larger filter sizes are used, देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम, this problem can result in dramatic increase. ये प्रॉब्लम रिजल्ट कर सकती है ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. दिस प्रॉब्लम कैन रिजल्ट इन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड व्हेन लार्जर फिल्टर साइजेस आर यूज्ड. जब बड़े फिल्टर साइजेस यूज होते हैं, सच एज 5x5 एंड 7x7. To address this problem, a 1x1 convolution layer can be used that offers a channel-wise pooling. ठीक है, अब ऐसी समस्याओं में, ऐसी समय में हम लोग 1x1 convolution layer यूज करते हैं that offers a channel-wise pooling. यानी 20 चैनल है तो वो मर्ज होके एक बन गया. Often called feature map pooling. Feature map pooling or a projection layer. तो इसको हम लोग feature map pooling या projection layer कह रहे हैं. This simple technique can be used for dimensionality reduction, decreasing the number of feature maps
whilst retaining their salient features. It can also be used directly to create a one-to-one projection of the feature map. It can also be used, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, it can also be used directly to create a one-to-one projection. It can also be used directly to create a one-to-one projection of the feature maps, to pool features across channels, or to increase the number of feature maps, such as after traditional pooling layer. In this tutorial, you will discover how to use a one-by-one filters, that is kernel size, to control the number of feature maps in a convolution neural network. After completing this tutorial, you will know how one-by-one filter can be used to create a linear projection of a stack of feature maps. The projection created by one-by-one filter can act like channel-wise pooling and be used for dimensionality reduction. The projection created by one-by-one filter can also be used directly or be used to increase the number of feature maps in a model. अब इनका उपयोग हम कर सकते हैं नंबर ऑफ फीचर मैप्स बढ़ाने के लिए। 20 फीचर मैप से वन बाय वन आपने कर्नल साइज चला तो सारा, और एक ही फीचर मैप बना तो सब मर्ज होके एक बना। इसको हम कहते हैं फीचर मैप पूलिंग। फीचर मैप की पूलिंग होके एक बना दिया। This tutorial is divided into 5 parts. They are convolutions over channels, problem of too many feature maps, downsample feature maps with one-by-one filters, example of how to use one-by-one convolutions, example of one-by-one filter in CNN model architectures. Let's see. Convolutions over channels. Recall that a convolutional operation is a linear application of a smaller filter to a larger input that result in an output feature map. एक feature map बनता है, linear calculation ही है ना? उनके kernel size अब चलाते हो और उसका feature maps निकालते हो, उसको map करके एक नया feature map बनाते हो. A filter applied to an input image or input feature map always result in a single number. Okay, that is fine. A filter applied to an input image or input feature map always results in a single number. The systematic left to right the systematic left to right and top to bottom applications of the filter, अब वही लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं कर्नल साइज में और टॉप टू बॉटम जाते हैं, यही तो करते हैं, घुमाते रहते हैं अपने कर्नल को, यानी फिल्टर को. The systematic left to right and top to bottom application of the filter to the inputs result in a two-dimensional feature map. ठीक, one filter creates one corresponding feature map. ठीक है. A filter must have the same depth or number of channels as the input. Yet, regardless of the depth of the input and the filter, the resulting output is a single number. भाई कितने भी फिल्टर मैप है. अब प्रियंवदा आपको समझ में आ रहा है? हाँ. तो देखिए डाउन सैम्पलिंग किसको कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा डिस्कस करके बताते हैं. इसका कहाँ गया, शेयर में आता है, सॉरी शेयर में आता है व्हाइट बोर्ड. देखिए प्रेमदा आप वो कैगल पे कुछ प्रैक्टिस कर रही हैं? कैगल पे तो उतना नहीं किया है. हाँ कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा कीजिए, दो लाइन कीजिए. एक दिन में 2 लाइन कोड लिखिए कैगल पे, लेकिन जब 30 दिन बाद जब आप सो के उठेंगी तो आप देखेंगी कि आपने 30 दिन में 30/2 60 लाइन ऑफ कोड्स लिख दिया है कैगल पे. जब आप देखेंगे कि आपने एक महीने में 60 लिखा है तो आपको मोटिवेशन आएगा. फिर 2 से 3 करेंगी तो उसके अगले महीने कितने हो गए, 90 लाइन्स ऑफ कोड. फिर मोटिवेशन आएगा, एक लाइन और बढ़ाए, एक दिन में 4 लाइन कोड. अब आपके पास तो चैट जीपीटी है, हर चैट जीपीटी पर रिसर्च कीजिए,
कोड दे देगा, आप लिखिए, दिमाग में जो प्लान आ रहा है चैट जीपीटी पर डाल के उसका कोड जनरेट कीजिए और कैगल पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए हम लोग डाउन सैंपलिंग की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये मेरी इमेज है, 3 4। अब ये मान लीजिए एक चैनल हो गया, ये 2 चैनल हो गया, 3। जब मैं इसका 1 बाय 1 चलाऊंगा, यानी एक चैनल, तो ये एक बार एक एक राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो गया जो अभी बात कर रहे थे, एंड देन टॉप टू बॉटम। तो देखिए जब हम चलाते हैं, और इसमें क्या है, मैंने फिल्टर आर कर्नल साइज मैंने 1 बाय 1 रखा, तो ये सीधे मैप हो रहा है। अब देखिए मैप क्या हो रहा है, ये भी तो है, ये भी तो तीनों का मल्टीप्लाई होके एक मैप हुआ, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई होके एक मैप हुआ है? अगर एक फीचर मैप बना रहा हूं तो क्या हुआ, मेरे पास एक ही में जो डाउन सैंपलिंग इसी को कह रहे हैं, ये भाई साहब एक ही फीचर मैप बनाया, क्या हुआ, फीचर वाइज डाउन सैंपलिंग हो गई, है ना, फीचर वाइज डाउन सैंपलिंग हो गई। यही कह रहे हैं कि डाउन सैंपल कर दो, स्ट्रॉन्ग फीचर्स ले लो, और इस पे जब मैक्स पुलिंग करोगे आप 2 बाई 2, तो क्या होगा, ये आधा रह जाएगा, है ना। तो ये जो है इस तरीके से भी स्ट्रॉन्ग फीचर्स हो गए, ये मैक्स पुलिंग है, ये भी डाउन सैंपलिंग है। तो इसी चीज को समझाया जा रहा है कि डाउन सैंपलिंग कैसे कर रहे हैं। चलिए, a filter must have the same depth or number of channel as the input, yet regardless of the depth of the input and the filter, the resulting output is a single number, and one filter creates a feature map. The resulting output is a single number, and one filter creates a feature map with a single channel. Let's make this concrete with some example. The input has one channel, such as grayscale image, then a 3 by 3 filter will be applied in 3 by 3 into one block. भाई सिंगल वो है, तो अब देखिए फीचर वाइज डाउन सैंपलिंग की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आप फिल्टर साइज चलाओगे हैं 3 by 3 या क्या, वो रिजल्ट करेगा एक ही फीचर मैप में। If the input image has 3 channels for red, green and blue, then 3 by 3 filter will be applied in 3 by 3 by 3 blocks. 3 by 3 का फिल्टर साइज पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तीनों चैनल पे, तो वही चीज है। If the input is a block of feature map from another convolutional or pooling layer and it has a depth of 64, then the 3 by 3 filter will applied as 3 by 3 by 64 blocks to create the single values to make up the single output feature map. The depth of the output of one convolutional layer is only defined by the number of parallel filters applied to the input. The depth of the output of one convolutional layer is only defined by the number of parallel filters applied to the input. Problem of too many features map. अगर बहुत सारे फीचर्स मैप हैं तो देखिए द डेप्थ ऑफ द इनपुट और नंबर ऑफ फिल्टर्स, the depth of the input or number of filters used in convolutional layers often increases with the depth of the network. ठीक है, the depth of the input or number of filters used
in convolutional layer, the depth of the input or number of filters, जितने भी number of filters हैं used in convolutional layer, the depth of the input or number of filters used in convolutional layers often increases with the depth of the network, resulting in an increase in the number of resulting feature maps. It is common model design pattern. Further, some network architectures such as the Inception architecture may also concatenate the output feature maps from multiple convolution layer. देखिए इंसेप्शन और रेजनेट अंतर क्या है? इंसेप्शन में मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे की सीरीज में हम उसके आउटपुट को कंकैटिनेट करें. जब पैरेलल है तो उन सब का देखिए सीरीज में तो एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है, उसका आउटपुट उसके अगले लेयर के लिए इनपुट है. लेकिन अगर पैरेलल है तो वो सारी इनपुट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मल्टीपल पैरेलल फिल्टर्स में, मल्टीपल पैरेलल फीचर मैप्स में, और उनका जो आउटपुट्स आया उसको हम लोग कंकैटिनेट कर रहे हैं. ठीक है. Concatenate the output feature map from multiple convolution layer, which may also dramatically increase the depth of the input to subsequent convolution layer. तो क्या हुआ? डेप्थ मतलब फीचर मैप्स ज्यादा हो जा रहे हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि डेप्थ ऑफ द इनपुट टू सब्सिक्वेंट कन्वोल्यूशनल लेयर्स बढ़ जा रहा है. अब देखिए दोस्तों, जो डेप्थ ऑफ द इनपुट टू सब्सिक्वेंट कन्वोल्यूशन लेयर इंक्रीज हो रहा है और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है. ये है दोस्तों हमारा इंसेप्शन मॉडल का. अब दोस्तों आते हैं हम रेसनेट. रेसनेट में क्या है? हम दो कन्वोल्यूशन लेयर का ब्लॉक ले रहे हैं और उन दो के पहले वाले जो कन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट है उसका आउटपुट नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर में तो जा ही रहा है, लेकिन उसके आउटपुट को हम लोग दो कन्वोल्यूशन लेयर स्किप करके आगे आ रहे हैं और इन दोनों कन्वोल्यूशन लेयर का जो ब्लॉक का जो आउटपुट उसके साथ मर्ज करके आगे भेज रहे हैं. ये हमारा क्या कहला रहा है? रेजिडुअल रेजनेट नेटवर्क है. ठीक है. which may also dramatically increase the depth of the which may also dramatically increase the depth of the input to subsequent convolution layers. अब देखिए, large number of feature maps in a convolution network can cause a problem as a convolution operation. एक सेकंड. ठीक है. अब देखिए, large number of feature maps in a convolution neural network can cause a problem as a convolution operation must be performed down through the depth of the input. A large number of feature maps in a convolution neural network can cause a problem as convolutional operations must be performed down through the depth of the input. This is a particular problem. If the convolutional operations being performed is relatively large, अगर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, देखिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म जो किया गया है वो बहुत लार्ज है, जैसे 5x5 या 7x7 पिक्सल्स, as it can result in considerably more parameter weights, और बहुत ज्यादा पैरामीटर जनरेट हो जाएंगे जो हमें ट्यून करने हैं. And in turn, computation to perform the convolutional operations, large space and time complexity. Pooling layers are designed to downscale feature maps. Pooling layer क्या है? डिजाइन किया गया है to downscale feature maps and systematically half the width and height of feature maps in the network. Nevertheless, pooling layers do not change the number of filters in the model. याद रखिए, पूलिंग लेयर्स जो है चेंज नहीं करता है नंबर ऑफ फिल्टर्स इन द मॉडल. द डेप्थ और नंबर ऑफ चैनल्स.
nevertheless pooling layer do not change the number of filters in the model. हमें ये याद रखना है, pooling layers do not change the number of that is right. Pooling layers, सॉरी मैं इस चीज को मेंशन करना भूल गया कि देखिए हमें याद रखना है कि 1 by 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 by 1 एंड पूलिंग लेयर। अब देखिए वही जो मैं आपको समझा रहा था ये व्हाइट बोर्ड पे, कि ये देखिए दोस्तों जो 1 by 1 है, फीचर वाइज पूलिंग हुई है, फीचर वाइज डाउन सैंपलिंग हुई है इसकी। अब देखिए मैक्स पूलिंग क्या है, मैक्स पूलिंग में अगर मान लीजिए ये है, ये है, ये है, और हमने मैक्स पूलिंग कर दिया दोस्तों, तो क्या हो गया, ये इतना छोटा बन गया। लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ फीचर मैप्स रिमेन्स द सेम। नंबर ऑफ फीचर मैप्स रिमेन्स द सेम। इसका साइज जो बड़ा था वो छोटा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ फीचर मैप्स तो क्या है, डायमेंशंस के टर्म में डाउन सैंपलिंग हुई है। दैट इज द 1x1 फिल्टर मैप वर्सेस मैक्स पूलिंग। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, लेकिन अभी आज के जमाने में इंटरव्यूअर्स इतना डीप नहीं गए हैं। तो 1 by 1 फिल्टर मैप वर्सेस मैक्स पूलिंग, ये है दोस्तों। तो प्रेमदा आपको समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो 1 by 1 देखिए, 1 by 1 जो हम ये 3 by 3 करते थे उसी को 1 by 1 बोल रहे हैं कि इतना, तो इतने का इतना है ना, मर के एक बन गया। अब यहां भी आपके पास ऑप्शन तो रहते हैं कि कितने फीचर मैप बनाने हैं। आप एक बनाओगे तो क्या हुआ, मर्ज होके एक इमेज बन गई। ये इतने सारे जो है डाउन सैंपल होके एक बन गए। फिर हम इसको बढ़ा दिए अगली बार, यही तो घटाते बढ़ाते घटाते बढ़ाते रहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 1 by 1 फिल्टर मैप जो कि ये है, एंड मैक्स पूलिंग जो कि ये है, ये रिड्यूस होके ऐसा बन रहा है, और ये जो इतना सेम है लेकिन ये साइज आधा हो जा रहा है, हाफ, है ना। तो ये चीज हम लोग को समझती है। चलिए द डाउन देखिए, पूलिंग लेयर्स आर डिजाइन टू डाउन स्केल, पूलिंग लेयर्स मैक्स पूलिंग जो है डिजाइन टू डाउन स्केल फीचर मैप्स and systematically halve the width and height of the feature maps in the network. Nevertheless, pooling layer do not change the number of filters in the model. ठीक है, अब देखिए the depth or number of channels. Deep convolution neural network requires a corresponding pooling type of layer. Deep convolutional neural network requires a corresponding pooling type of layer that can downsample or reduce the pooling type of layer that can downsample reduce the depth or number of feature maps. तो अब हमारे पास क्या है, मैक्स पूलिंग तो हो गई, उसका हाफ हो गया विड्थ एंड हाइट, लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ फीचर मैप्स कैसे रिड्यूस करें, तो वो है 1 by 1 फिल्टर। downsample feature map with 1 by 1 filters. The solution is to use a 1 by 1 filter to downsample the depth or number of feature maps. A 1 by 1 filter will only have a single parameter or weight for each channel in the input, and like the application of any filter result in a single output value. ठीक है, सिंगल। दिस स्ट्रक्चर अलाउज ए 1 by 1 filter to act like a single neuron with an input from the same position across each of the feature maps in the input. The single neuron can then be applied systematically with a stride of 1 left to right and top to bottom without any need for padding.
resulting in a feature map with the same width and height as the input. The 1 by 1 filter is so simple that it does not involve any neighboring pixels in the input. It may not be considering a convolutional operation. Instead, it is a linear weighting or projection of the input. Further, a non-linearity is used as with other convolutional layers, allowing the projection to perform non-trivial computation or the input feature maps. This simple 1 by 1 filter provides a way to usefully summarize the input feature map. The use of multiple 1 by 1 filters in turn allows the tuning of the number of summaries of the input feature maps to create effectively, allowing the depth of the feature maps to be increased or decreased as needed. A convolution layer with 1 by 1 filter can therefore be used at any point in a convolution neural network to control the number of feature maps. Okay. As such, it is often referred to as projection operation or projection layer. ठीक है, इसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन या प्रोजेक्शन लेयर बोलते हैं, और इवन ए फीचर मैप और चैनल पूलिंग लेयर. तो क्या हो गया, वो मैक्स पुलिंग लेयर है, ये चैनल पुलिंग है, यानी नंबर ऑफ फीचर मैप्स को घटा रहे हैं दोस्तों. चैनल पुलिंग लेयर, इसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन कह सकते हैं, प्रोजेक्शन लेयर कह सकते हैं, और इवन ए फीचर मैप और चैनल पूलिंग लेयर. चैनल पूलिंग लेयर बोला गया, मैक्स पूलिंग की जगह चैनल पूलिंग लेयर. नाउ दैट वी कैन नो that we can control the number of feature maps with 1 by 1 filters. Let's make it concrete with some example. कुछ example देखते हैं. देखिए, we can make the use of 1 by 1 filter concrete with some examples. Consider that we have a convolutional neural network, and convolution neural network that expected color images input with the square shape of 256 by 256 by 3 pixel. ठीक है, 256 रो और कॉलम वाली इमेज के पिक्सल के से 3 और उसके 3 चैनल्स हैं. These images then pass through a first hidden layer of 512 filters. तो हम लोग द फर्स्ट हिडन लेयर विद 512 फिल्टर्स बनाएंगे, यानी 512 फीचर मैप्स इसके बनाएंगे, each with the size of 3 by 3 with the same padding, followed by ReLU activation function. The example below demonstrate this simple model. अब देखिए, सीक्वेंशियल हमने keras.model इंपोर्ट सीक्वेंशियल, keras.layers इंपोर्ट conv2d, सीक्वेंशियल फंक्शन को कॉल करके इसको नाम दिया model.conv2d 512 3 by 3 पैडिंग सेम, यानी कि पैडिंग करेगा. एक्टिवेशन रेलू इनपुट सेप इतना इतना, मॉडल डॉट सम. ठीक है, अगर हम इसके पैरामीटर देखें तो 3 by 3 देखिए 512 फीचर मैप्स बन गए. टोटल पैरामीटर 14336, 14336. तो देखिए 3 चैनल्स, 3 by 3 का फिल्टर साइज मल्टीप्लाइड बाय 3 चैनल्स multiplied by 512 feature maps plus 512. ये क्या है, कोफिशिएंट्स, बीटा नॉट्स या समथिंग लाइक दैट. तो हमारे पास 14,336 पैरामीटर्स बनते हैं. Running the example, create the model and summarize the model architecture. There are no surprises. The output of the first hidden layer is a block of feature maps with the 3-dimensional shape of 256 by 256 multiplied by 512. Example of projecting feature map. अब देखिए अगली लेयर हम जोड़ रहे हैं. A 1 by 1 filter can be used to create a projection of the feature maps. The number of feature maps created will be the same number, and the effect may be a refinement of the features already extracted. This is often called channel-wise pooling.
as opposed to traditional feature-wise pooling on each channel. It can be implemented as follows. तो model.add हम लोग कर रहे हैं clear कर्व 2D 512 feature maps 1 by 1 activation review. We can see that we use the same number of features and still follow the application of the filter with the rectified linear activation function. The complete example is listed below. Example of a 1 by 1 filter for projection. From keras.models import sequential, from keras.layers import conv 2D, sequential conv 2D, 512 feature maps of 3 by 3 filter size, padding same, activation redo, and so on. Then I add model.add conv 2D 512 feature maps of 1 by 1. See, the number of parameters has gone tremendous. The 1 by 1, the number of features maps is same. Now example of decreasing the feature maps. अब हम decrease कर रहे हैं feature maps. तो model.add curve did is 64 feature maps 1 by 1. The composition of the 64 feature map is not the same. देखिए, the 1 by 1 filter can be used to decrease the number of feature maps. This is the most common application of this type of filter, and in this way, the layer is often called a feature map pooling layer. In this example, we can decrease the depth or channels from 512 to 64 feature maps. This might be useful in the subsequent layer. We were going to add to our model would be another convolutional layer with 7 by 7 filter. This filter would only be applied at a depth of 64 rather than 512. यानी हम पहले 64 फीचर मैप बना रहे हैं 1 by 1 फिल्टर के साथ, और उसके बाद हम एक और 64 का बनाएंगे by 7 by 7 फिल्टर के साथ. तो model.add कर दिया. The composition of the 64 feature map is not the same as the original 512, but contains a useful summary of dimensionality reduction that captures the salient features such that the 7 by 7 operation may have a similar effect on the 64 feature maps. 7 by 7 operation may have a similar effect on the 64 feature maps as it might have on the original 512. Further, a 7 by 7 convolutional layers with 64 filters itself applied to the 512 feature maps output by the first hidden layer would result in approximately 1 million parameter activation. If the 1 by 1 filter is used to reduce the number of feature maps to 64 first, then the number of parameters required for the 7 by 7 layer is only approximately 2 lakh. An enormous difference. तो number of parameters, देखिए 64 फीचर मैप बना रहे हैं, लेकिन 1 by 1 अगर हम फिल्टर्स लगा रहे हैं और 7 by 7 फिल्टर है, तो नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग के जो हमारे पैरामीटर्स है वो रिड्यूस हो रहा है. तो देखिए कैसे 512 फीचर मैप मैंने बनाया 3 by 3 फिल्टर चला के, उसके बाद 64 फीचर मैप बनाया 1 by 1. देखिए टोटल पैरामीटर 47,168 हमें ट्रेन करना पड़ा. अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग द फीचर मैप. एक काम करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं चेक करने के लिए, Ctrl+C, और यहां पे 7 by 7 कर देते हैं. ये देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 16,20,032 फीचर मैप्स हमें ट्रेन करने पड़े यहाँ पे. और यहाँ पे 1 by 1 मैंने साइज रिड्यूस किया. ये एक्चुअली में ये वाला कॉन्सेप्ट है. अब लोग पूछते हैं कि क्यों. आप एक बात बताइए, आपने फीचर मैप 64 बनाए या 1 बनाए, लेकिन जब नंबर ऑफ फिल्टर साइज 1 by 1 है दोस्तों, तो 47,168
पैरामीटर्स ही केवल ट्यून करने पड़े। लेकिन जब मैंने 7x7 का फिल्टर चलाया, अल्टीमेटली मुझे 64 फीचर मैप बन रहे हैं, सेम डायमेंशन मिल रहा है मुझे, सेम डायमेंशन दोस्तों, लेकिन यहां पे मुझे नंबर ऑफ पैरामीटर 16,20,032 ट्रेन करने पड़े। तो दैट इज ए मैसिव डिफरेंस। दैट इज व्हाई 1x1 फिल्टर साइज इज कॉल्ड चैनल वाइज पूलिंग। तो अब आपसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाई 1x1 चैनल 1x1 पूलिंग साइज इज कॉल्ड चैनल वाइज पूलिंग। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, अरे दिमाग इधर उधर चला जाता है। चलिए, तो ये देखा आपने, हम 64 फीचर मैप बना रहे हैं, यहां भी 64 फीचर मैप बना रहे हैं, यहां 1x1 का फिल्टर लगाया तो 47,168 पैरामीटर ट्यून कर रहे हैं, यहां पे 64 फीचर मैप्स बना रहे हैं, बट वी आर रनिंग 7x7 फिल्टर साइज एंड वी आर गेटिंग 16,20,032 फीचर पैरामीटर्स ट्यून कर रहे हैं। Example of increasing feature maps. The 1x1 filter can be used to increase the number of feature maps. अब हम लोग कर सकते हैं कि 1x1 filter can be used to increase the number of feature maps. अब फीचर में नंबर ऑफ फीचर मैप्स हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, हमें उतने पैरामीटर ट्यून नहीं करने हैं पड़ेंगे। तो दिस इज अ कॉमन ऑपरेशन यूज्ड आफ्टर ए पूलिंग लेयर prior to applying another convolutional layer. The projection effect of the filter can be applied as many times as needed to the input, allowing the number of feature maps to be scaled up and yet have a composition that captures the salient features of the original. We can increase the number of feature maps from 512 inputs from the first hidden layer to double the size as 1024 feature maps. Model.add current 2D 1024 1x1 activation rate. The complete example is listed below. Example of a 1x1 filter to increase dimensionality. अब देखिए, फ्रॉम केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंशियल, फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट कन्वोल्यूशन 2D। अब मैंने सीक्वेंशियल क्लास को कॉल किया, इसको नाम दिया मॉडल, मॉडल डॉट एड कन्वोल्यूशन 2D 512 फीचर मैप्स बनाए मैंने, 3x3 का चलाया साइकिल, पैडिंग इज इक्वल टू सेम, एक्टिवेशन वैल्यू इनपुट सेव 256 3, model dot add 2D 1024 1x1 activation value, model dot summary. Now you see 1x1 feature filter size and 1024 feature maps. That gave me 5,39,648 parameters to tune, right? Running example creates the model and summarizes its structure. We can see that the width and height of the feature maps are unchanged and that the number of feature maps was increased from 512 to double the size as 1024. Now that we are familiar with how to use 1x1 filters, let's look at some examples where they have been used in the architecture of convolutional neural network model. अब देखिए, now that we are familiar with how to use 1x1 filters, चलिए हम लोग एक नजर डालते हैं some examples where they have been used in the architecture of convolutional neural network model. Example of 1x1 filter in CNN model architectures. In this section, we will highlight some important examples where 1x1 filters have been used as key elements in modern convolutional neural network model architecture. Network in network.
The one by one filter was perhaps first described and popularized in the 2013 paper by Min Lin et al. In their paper titled Network in Network. In the paper, the authors proposed the need for a MLP convolutional layer and the need for cross-channel pooling to promote learning across channels. This cascaded cross-channel, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन फिल्टर चला रहे हैं. Authors propose the need for a multi-layer perceptron convolution layer and the need for cross-channel pooling to promote learning across channel. अब हमें cross channel pooling को promote कर रहे हैं ताकि across the channel हम important factors को, features को learn कर सकें. This cascaded cross channel parametric pooling structure cross-channel parametric pooling structure allows complex and learnable. This cascaded cross-channel parametric pooling structure allows complex and learnable interaction of cross-channel information. अब ये पेपर है नेटवर्क की नेटवर्क 2013. They describe a one by one convolution layer as a specific implementation of cross-channel parametric pooling, which in effect is exactly what a one by one filter achieves. ठीक है, तो ये in effect है is exactly ये one by one filter achieves. Each pooling layer perform weighted linear recombination on the input feature maps. ठीक है, हर पूलिंग लेयर को परफॉर्म करता है वेटेड लीनियर रिकॉम्बिनेशन ऑन द इनपुट फीचर मैप व्हिच देन गो थ्रू ए रेक्टिफायर लीनियर यूनिट. द क्रॉस चैनल पैरामीट्रिक पूलिंग लेयर is also equivalent to a convolution layer with one by one convolution kernel. आइए दोस्तों इंसेप्शन के आर्किटेक्चर को देखते हैं थोड़ा. The one by one filter was used explicitly for dimensionality reduction and for increasing the dimensionality of feature maps after pooling in the design of the Inception module. ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन का यूज कर रहे हैं फिल्टर का फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड फॉर इंक्रीजिंग द डायमेंशनैलिटी ऑफ फीचर मैप एंड फॉर इंक्रीजिंग द डायमेंशनैलिटी ऑफ द फीचर मैप की डायमेंशनैलिटी को बढ़ाने के लिए आफ्टर पूलिंग इन द डिजाइन ऑफ द इंसेप्शन मॉडल यूज्ड इन द गूगल लीनेट मॉडल इन क्रिश्चियन सेकेडी et al. In their 2000 paper titled Going Deeper with Convolutions, introduced later. The paper describes an inception module where an input block of feature map is processed in parallel. The paper describes an inception module The paper describes an inception module where an input block of feature maps, जहां की एक input block of feature maps is processed, एक input block of feature maps is processed in parallel by different convolution layer. देखिए ये है, ये देखिए ये एक ब्लॉक है, इनपुट ब्लॉक ऑफ फीचर मैप्स. ये इनपुट ब्लॉक ऑफ फीचर मैप्स है दोस्तों, is processed by different convolution filter sizes in parallel. यही इंसेप्शन है दोस्तों. ठीक है, चलिए
देखिए क्या कह रहे हैं, एक फीचर मैप्स देखिए, बहुत सारे लेयर्स से निकलते 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 ही कुछ नंबर ऑफ फीचर मैप है, कुछ 50-100। इन फीचर मैप पे देखिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या, एक ये डाला हमने 1x1 कन्वोल्यूशन, एक पैरेलल में 3x3 का फिल्टर साइज भी चलाया, और इन फीचर मैप पे एक 5x5 का भी फीचर मैप फिल्टर साइज चलाया, और इस पे एक 3x3 मैक्स पूलिंग का भी फीचर मैप चलाया, फिल्टर साइज चलाया, सॉरी फिल्टर साइज, और इन सब के रिजल्ट को कंकैटिनेट कर लिया, कहीं ना कहीं हर तरह की फिल्टर का उपयोग किया और उसके आउटपुट्स को कंकैटिनेट किया। यही है दोस्तों इंसेप्शन मॉडल। तो अब आप ठीक आप समझ गए होंगे इंसेप्शन। अब आपसे कभी कोई सवाल पूछे इंटरव्यू में, कुछ टेढ़े लोग मिल जाते हैं जो उल्टपटांग बातें करते हैं कि भाई इंसेप्शन का आर्किटेक्चर बता, तो आपको इंसेप्शन का आर्किटेक्चर नहीं बताना है, आप उसे बोले कि सर मुझे इंसेप्शन का आर्किटेक्चर नहीं आता। वो एक कठिन हो सकता है, लेकिन इंसेप्शन में एक टेक्निक, एक थॉट, जो विजन था, वो मैं बता सकता हूं। और वो विजन ये है कि देखिए मैं मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर सीरीज में लगा रहा हूं, और फिर उसके बाद मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर पैरेलल में लगा रहा हूं। सीरीज में जब लगा रहा हूं तो उसका सेम पर्पस है। अच्छा देखिए, सीरीज में भी जब लगा रहा हूं तो उसमें आप एक देखेंगे, पहले मैं 1x1 का फिल्टर लगा रहा हूं, फिर 3x3 का, फिर 7x7 का, फिर मैक्स पूलिंग कर रहा हूं। यह करने के बाद चलिए मैं आपको मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए इंसेप्शन में ये क्या कर रहे हैं, वीवर मॉडल देखिए, एक ये इन्होंने चलाया 1x1 का फिल्टर, फिर 3x3 का फिल्टर, फिर 7x7 का फिल्टर, फिर मैक्स पूल किया 3x3 का फिल्टर। जो आउटपुट आया दोस्तों देखिए, ये सारे फिल्टर, अब इस पे इन्होंने इस आउटपुट पे एक पैरेलल में चलाया, क्या, एक 1x1 का फिल्टर, एक 3x3 का कन्वोल्यूशन फिल्टर साइज लेयर, एक 7x7 का, और फिर एक 3x3 का मैक्स पूलिंग, और इनके रिजल्ट्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया। फिर इस पे इधर एक ब्रांच बना, इधर बचा, इस पे भी इन्होंने सब बनाया। देखिए क्या कर रहे हैं, ये 1x1 का फिल्टर चलाया, ठीक है, यानी एक तरीके की डाउन सैंपलिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल वाइज फीचर पूलिंग, जैसे मैक्स पूलिंग है चैनल वाइज, ये डिटेल में अभी हम लोगों ने समझा। फिर उन्होंने कहा कि 3x3 फिल्टर चलाएंगे। अब देखिए अंतर क्या है, 3x3 1x1 चला रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम है। मान लीजिए यहाँ पे आप 64 फीचर मैप जनरेट कर रहे हो, यहाँ भी सेम 64 ही रहने देते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम ट्यून करने पड़ेंगे, यहाँ ज्यादा। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि डेप्थ में जाता है तो वो एक बार में उतने लेते हैं, और 3x3 उतने मल्टीपल्स हो जाते हैं, और एक बार में लेफ्ट टू राइट एक एक स्ट्राइड करता है, टॉप टू बॉटम एक एक स्ट्राइड करता है, तो वो कई बार कैलकुलेशन होती है, तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जितना हम फिल्टर साइज बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7x7 का फिल्टर साइज लगाया कि देखिए भाई और फीचर क्या एक्सट्रैक्ट है, फिर मैक्स पुलिंग किया। इस मैक्स पुलिंग की जो भी लेयर है, मान 60, इस पे देखिए पैरेलल में, इस पे एक्सपेरिमेंटेशन इसको कहते हैं। देखिए 1x1 का फिल्टर साइज चलाया कि देखिए क्या निकलता है, फिर 3x3 का फिल्टर साइज चलाया, क्या निकलता है, कुछ निकला होगा। सभी तरह का एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं। 7x7 का फिल्टर साइज चलाया, फिर देखा क्या वेरिएशन निकल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। 3x3 का मैक्स पूलिंग कर दिया, क्या निकलता है। इन सब तरह की एक्सपेरिमेंटेशन से जो बात बन रही है उसको कंकैटिनेट कर दिया, और फिर फर्दर ये लेयर्स लगाना आजू बाजू में ये चालू कर दिए। ये है दोस्तों, ये है गाइस मुख्य कॉन्सेप्ट of inception. This is the real concept, and it has 152 deep neural network layers. तो ये चीजें हमें समझना है कैसे हो रही है, ठीक है। चल, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। द आउटपुट ऑफ द पैरेलल लेयर्स आर देन स्टैक्ड,
channel wise, resulting in very deep stacks of convolutional layers to be processed by subsequent Inception modules. The merging of the output of the pooling layer with the output of convolutional layers. The merging of the output of the pooling layer with the output of convolutional layers would lead to an inevitable increase in the number of outputs from stage to stage. Even while the architecture might cover the optimal sparse structure, it would do it very inefficiently, leading to a computational blow-up within a few stages. The Inception module is then redesigned to use, अब देखिए क्या होता है, if the number of output from stage to stage, अलग अलग यहाँ पे जैसे आउटपुट है, तो क्या करना है इनको, 1 by 1 कन्वोल्यूशन चला के सबको सेम साइज कर सकते हैं. Increase in the number of output from stage to stage, even while the architecture might cover the optimal sparse structure, it would do it very inefficiently, leading to a computational blow-up within a few stages. The Inception module is then redesigned to use 1 by 1 filters. The Inception module को हम redesign करते हैं to use 1 by 1 filters to reduce the number of feature maps prior to parallel convolution layer. जो parallel convolution layer के पहले जितनी थी with 5 by 5 and 7 by 7 sized filters. This lead to the second idea of the proposed architecture, judiciously applying dimension reduction and projections wherever the computational requirements would increase too much. तो हमें बहुत ही समझदारी से डायमेंशन रिडक्शन और प्रोजेक्शंस का ध्यान देना है, wherever the, जहां कहीं भी, wherever the computational requirements would increase too much. Wherever the computational requirements would increase too much. Otherwise, that is 1 by 1 convolutions. Otherwise, that is 1 by 1 convolutions are used. Otherwise, that is 1 by 1 convolutions are used to compute reduction before the expensive 3 by 3 and 5 by 5 convolutions. यानी 3 by 3 और 5 by 5 के पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सब में नंबर ऑफ लेयर्स और डायमेंशंस अलग हो सकते हैं, तो हमें 1 by 1 का फिल्टर चला के सबको सिंगल फीचर मैप का बना लेना है, और उसके बाद हम कोई उसको पैरेलल में चलाएं. Convolution, besides being used as reductions, they also include the use of rectified linear activation, which makes them dual purpose. तो rectified linear unit भी use हो रहा है, तो ये dual purpose हमारा बन जा रहा है. The 1 by 1 filter is also used to increase the number of feature maps The 1 by 1 filter is also used to increase the number of feature maps after pooling. ठीक है, आपने पहले भी देखा कि 1 by 1 का हम यूज कर सकते हैं फीचर मैप्स बढ़ाने के लिए भी पूलिंग के बाद, artificially creating more projections of the downsampled feature maps content. यानी अप्राकृतिक रूप से नए वाले डेटा को मैच करने के लिए हम उसका नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं. तो देखिए, ये जो है हमारी इनपुट की लेयर है, बहुत सारी लेयर से गुजरते हुए कुछ 64 फिल्टर, समझ लीजिए 64 फीचर मैप्स हैं, और ठीक है कुछ पिक्सल्स होंगे. तो अब देखिए हमने पैरेलल में चलाया 1 by 1 कन्वोल्यूशन, 1 by 1 कन्वोल्यूशन, 1 by 1 कन्वोल्यूशन, 3 by 3 मैक्स पूलिंग. अब ताकि सब एक एक फीचर मैप बन जाए,
अब इसके ऊपर पैरेलली देखे 3x3 कन्वोल्यूशन, 5x5 कन्वोल्यूशन, 1x1 कन्वोल्यूशन। अब ये चला और फिर ये कंकैटिनेट हुआ ताकि सबका शेप बराबर हो और इन सब का आउटपुट मैच करे, तभी तो इसको हम कंकैटिनेट कर पाएंगे। दोस्तों डिफरेंट डायमेंशन की दो चीजों को कंकैट नहीं कर पाएंगे हम। सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा कहने का मतलब था कि यहां पे फिर से देखिए ध्यान से, ये मेरी कुछ समझ लीजिए 512 फीचर मैप्स हैं। मैं 1x1 कन्वोल्यूशन लगा रहा हूं ताकि सब बन जाए एक, वन फीचर मैप बन गया दोस्तों, वन फीचर मैप, वन फीचर मैप वन। अब इसके ये तो एज इट इज कंकैट है, इस पे 3x3 का कन्वोल्यूशन लगाया मैंने और सेम कर दिया, पैडिंग इज इक्वल टू सेम, पैडिंग इज इक्वल टू सेम, ताकि सेम शेप का बने। ये 3x3 मैक्स पूरिंग की और इसका 1x1 का कन्वोल्यूशन लेकर आ गए हम लोग। अब इनके जो रिजल्ट है, यानी 1x1 भी लगा दिया, 3x3 का फिल्टर चला दिया, 5x5 का चला दिया, 1x, अब सब जो वेरिएशन जो 3x3 के मैक्स पूलिंग के ऊपर ये लगा हुआ, इन सबको हम लोगों ने कंबाइन करके कंकैटिनेट कर दिया सेम डायमेंशंस। तो ये है दोस्तों हमारा काम करने का तरीका, किस तरीके से हम लोगों ने इंसेप्शन वर्जन 1 को हम हैंडल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन है दोस्तों इंसेप्शन वर्जन 1 का। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये इंसेप्शन वर्जन 1 था। अब इन बहुत ही ध्यान से रेसिडुअल आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखिए, the 1x1 filter was used as a projection technique to match the number of filters of input to the output of residual models. In the design of the residual network by Kemming He et al. In their 2015 paper titled Deep Residual Learning for Image Recognition. ठीक है, 1x1 फिल्टर को हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्शन मैपिंग, प्रोजेक्शन टेक्निक या फिर चैनल वाइज पूलिंग। The author describes an architecture comprised of residual modules. ठीक है, ऑथर डिस्क्राइब करता है एक आर्किटेक्चर को जो कि comprised of residual modules है, where the input to a module is added to the output of the module in what is referred to as shortcut connection. अब ये shortcut connection देखिए समझना है। Because the input is added to the output of the module, the dimensionality must match in terms of width, height, and depth. ठीक है, the width and height can be maintained via padding. Width or height, although a 1x1 filter is used to change the depth of the input. अब हमेशा ध्यान रखिए, width, height, depth, width, height and depth. तो width और height को हम लोग मेंटेन करेंगे पैडिंग से, padding is equal to same, while depth will be maintained by 1x1 filter running the 1x1 filter size. So although a 1x1 filter is used to change the depth of the input as needed so that it can be added with the output of the module. So every time when we are doing a shortcut connection in residual architecture, we will do three things: maintaining the width, height, and depth of the feature map of a convolution layer. And this is
Width and height will be maintained by padding, by keeping the padding is equal to same, and depth will be maintained by running the 1x1 filter, so that it can be added with the output of the module. This type of connection is referred to as a projection shortcut connection. Further, the residual module uses a bottleneck design with 1x1 filters to reduce the number of feature maps. The residual module use a bottleneck design with 1x1 filters to reduce the number of feature maps for computational efficiency reason. ठीक है, एक बॉटलनेक है, एक समस्या है इस डिजाइन में, क्या कि हम 1x1 फिल्टर का यूज करते हैं ताकि नंबर ऑफ फीचर मैप को रिड्यूस करके 1 कर सके, ताकि कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी हमें मिल सके। अब देखिए दोस्तों, द 3 layers 1x1, 3x3 and 1x1 convolution, where the 1x1 layers are responsible for reducing and then where the 1x1 layer are responsible for reducing and then increasing, restoring dimensions, leaving the 3x3 layer. देखिए क्या हो रहा है, 1x1 layer responsible for reducing and then increasing, restoring dimensions, leaving the 3x3 layer a bottleneck with a smaller input output dimension. देखिए क्या है, यहां पे एक ब्लॉक है 2 कन्वोल्यूशन लेयर का, एक 3x3 64 फीचर मैप, 3x3 64 फीचर मैप, यहां पे रेनू लगा है, यहां पे इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है और इसके पहली वाली लेयर का आउटपुट इसके लिए इनपुट है। तो उसका इनपुट आउटपुट इसके लिए इनपुट बना, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट बना और इसका आउटपुट यहाँ पे आया। यहाँ पे जो 64 डायमेंशन की जो लेयर है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं और यहाँ पे कंकैटिनेट कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और फिर इस पे रेनू लगा के अगली वाली लेयर में डालें। ये है हमारा रेसिडुअल नेटवर्क। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बचा, यहां पे हम एक 1x1 के लेयर लगा रहे हैं। देखिए 1x1 64 लेयर, तो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है दोस्तों, उस पे 1x1 का फिल्टर साइज चला के उसका हम लोग डायमेंशन रिड्यूस करके सिंगल इमेज बना रहे हैं या सिंगल चैनल बना रहे हैं, सॉरी रिड्यूस करके 64 फीचर मैप्स बना रहे हैं। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने 3x3 का 64 लगाया और उसके बाद फिर से हम लोगों ने 1x1 का फिल्टर साइज चला दिया, 256 फीचर मैप्स बना के बढ़ा दिया हम लोगों ने। ये कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी के लिए सिर्फ किया जा रहा है, चूंकि यहाँ पे फिर से 256 इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है इस लेयर पे वो 256 है और ये यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे जमा दिया, जोड़ दिया 256 सेम डायमेंशन तो ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहां से दोस्तों जो एक लेयर का आउटपुट था वो इस लेयर में इनपुट था। कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने इस पे 1x1 फिल्टर साइज चला के 64 फीचर मैप्स कर लिया, डायमेंशन रिड्यूस कर लिया चैनल वाइज। फिर इस पे हम लोगों ने रेनू लगाया, 3x3 का फीचर मैप चलाया और फिर उसका आउटपुट लिया। फिर इसके ऊपर 1x1 का फिल्टर साइज चलाया, 256 फीचर मैप फिर से बना दिया। अब यहाँ पे जो आउटपुट है ये आउटपुट मैच कर रहा है डायमेंशन, दोनों को हम लोग कनकैटे, और इसी तरह की 152 लेयर्स चल रही हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं। यही हमारा रेसिडुअल रेजनेट है। तो आई होप कि दोस्तों आपने तो बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर समझ लिए होंगे, इंसेप्शन वर्जन 1 और रेजनेट। This section lists some ideas for extending the tutorial that you may wish to explore. The 1x1 filter can be used to create a linear projection of a stack of feature maps. The projection created by a 1x1 filter can act like channel-wise pooling and be used for dimensionality reduction. The projection created by 1x1 filter can also be used directly or be used to increase the number of feature maps in a model if you explore any of these extensions. और VGG आपने देख लिया, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है VGG मॉडल, ठीक है। हाउ टू इंप्लीमेंट दोस्तों आर्किटेक्चर इनोवेशंस।
इस आर्किटेक्चर की इनोवेशंस को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है दोस्तों. There are discrete architectural elements from milestone models that you can use in the design of your own convolutional network, neural network. Specifically, models that have achieved state-of-the-art results for tasks like image classification use discrete architecture elements repeated multiple times, such as the VGG block in the VGG model, the Inception module in the Google LeanNet, and the residual model in the ResNet. Once you are able to implement parameterized version of these architecture elements, you can use them in the design of your own model. अब एक बार आप समझ जाओगे, once you are able to implement parameterized versions of these architecture elements, दोस्तों, once you are able to implement parameterized version of these architecture elements, you can use them in the design of your own models for computer vision and other application. In this tutorial, you will discover how to implement the key architecture element from milestone convolutional neural network model from scratch. After completing this tutorial, you will know how to implement a VGG module used in VGG 16 and VGG 19 convolution neural network models, how to implement naive and optimize Inception module used in Google LeanNet, how to identify residual model used in the ResNet model. ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग इनको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करते हैं. So Priyambada, would you like to continue? हाँ ठीक है. आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत डीप में जा रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है कि इसको आप समझ लेंगे तो आप जो है इंटरव्यूज आपके कभी नहीं रुकेंगे. ठीक है, ठीक है. मैं सोच रहा था कल करें. ओके. ये कोडिंग का पार्ट है, इसको कल करेंगे. ठीक है. है ना? आज काफी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हो गई. तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण थी. तो एक सेकंड में जरा देख लूं हमारे पास कितने हैं कंप्यूटर विजन के. ये 2 हम चल रहे हैं और उसके बाद बस 3 है. एक सेकंड देख लें 2 में कहां तक जा रहे हैं हम. ये ना ये आर्किटेक्चर लिखना सीख जाएंगे, है ना? तो इसके बाद कुछ है नहीं इसमें. ये इसके बाद केवल प्रोजेक्ट है, ड्रॉप आउट एंड डेटा ऑगमेंटेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन. ये प्रोजेक्ट है, ड्रॉप आउट एंड डेटा ऑगमेंटेशन. फिगर से अंदर अच्छा, ये बीजीजी के ब्लॉक्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग. एक सेकंड, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.